And this question is related to factorial, right? How we can find the factorial. So the task is, here we are having one number that is C, that is count, number n, and factorial one, that is also a variable, these three variable, and we need to give one simple output, and that is the factorial of any number, right? So how we can find the factorial of any number? If we have, let's say, if we have a number 5, or if we have a number 3, so how we can find the factorial of 3? So factorial of 3 equals to 3 into 2 into 1 equals to the factorial of 3, that is 6. Take. Similarly, if I am having a number 5, and if I want to find the factorial of this 5, right? How can I find 5 into 4 into 3 into 2 into 1? This is the factorial. This is the formula for factorial. Okay? Means n into n minus 1 into n minus 1 into n minus 1, like that. Okay? If I want to find the factorial of 4, so what is the factorial of 4? 4 into 3 into 2 into 1. Okay? So this is the factorial of 4. And what is the factorial of 0? The factorial of 0 equals to 1. Okay? The factorial of 0 equals to 1, the factorial of 1 equals to 1, and the factorial of 2 equals to 2 into 1 equals to 2. Okay? So the factorial problem is clear, guys. How we what is the problem? Okay? How we can calculate the factorial of any given number. If I'm having one number n and the value of n is 6, so how I can find the factorial? Is this is clear, guys? Is this is clear? If it is clear, then type yes or CLR in the chat box. Okay, so we can start with our first coding question, that is factorial of n number, the factorial of n. Okay. Okay, so we are starting with this. So let's say I'm having number n, and n number, it might be 6, it might be 7, it might be anything. We are taking the input from the user. Okay? We are taking input from the user, and input is an integer. Okay? So we have taken the input from the user, and after that, what we will do? We will iterate that number. Let's say I'm having number 6, and I just want to iterate this. So from where I can iterate? From for loop I can iterate, like, because for loop will work from 0 to n minus 1. Okay? For loop will work from 0 to n minus 1. If I want, then it will work from 1 to n plus 1. It will also execute to 1 to n plus 1. ठीक है? तो हम execute करवाने की कोशिश करते हैं इसको. ठीक? तो for loop हमने लिया for I in range of, for I in range of, from कहाँ से लेना है हमको? We just want, right? We want, if we want to find the factorial of 6, then factorial of 6 should be 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Then it will be 1, right? So first I want 1, then I want 2, 3, 4, 5, 6, like that. First I want this 1. Okay? So the range would be start from 1. In this way, the range would be start from 1, and the range would be goes to n plus 1. Why this is n plus 1? Because for loop will always execute from 0 to n minus 1. Okay, n minus 1. If I also want to include this number, if I also want to include n number, means 6 number, then I have to given here n plus 1. ठीक है, this is clear? यहाँ पे मेरे को n plus 1 देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को n तक चलाना है, मेरे को n तक इंटू चाहिए. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, like that. I want like that. ठीक है, तो इसलिए मेरे को n तक उसको चलाना पड़ेगा. ठीक, उसके बाद में मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, एक सिंपल एक छोटा सा वेरिएबल ले लूंगा, दैट इज फैक्ट. और फैक्ट की वैल्यू शुड बी 1, बिकॉज 1 into anything equals to anything. और if I say 0 into anything, 0 into n equals to 0. ठीक है, it will be giving me 0. That's why I am taking here 1, because 1 into anything, 1 into n equals to n. ठीक है, और 1 into 5 equals to 5. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा, अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा, तो किसी से भी इंटू करूंगा तो 0 हो जाएगा. लेट्स से यहाँ पे 4 आया, तो 4 into 0 equals to 0 हो जाएगा. एंड आई डोंट वांट 0. ठीक है, आई वांट दैट नंबर, आई वांट फैक्टोरियल. ठीक, तो मैंने एक फैक्ट वेरिएबल ले लिया. ठीक है, फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू मैंने 1 रख दी, और फिर मैं क्या करूंगा, इस फैक्ट वेरिएबल के अंदर हर बार चीजों को इंटू करवा के स्टोर करते जाऊंगा. ठीक है, तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई. And what is I? I is, what is I? I is 1, I is 1, I is 2, I is 3, I is 4 till n. I is till n. ठीक है, तो I ऐसा आता जाएगा, और वो मेरा इसके अंदर इंक्लूड होता जाएगा. ठीक है, लाइक दैट. और यहाँ पे मैं एट द एंड आई विल प्रिंट
फैक्ट, ठीक है, आई विल प्रिंट फैक्ट। दिस इज अ सिंपल कोड ऑफ फैक्टोरियल of any given number. Let's say I'm giving here 5. I'm giving here 5, तो 5 का फैक्टोरियल इज 120, ठीक है। हाउ इट इज कैलकुलेटिंग, इट इज कैलकुलेटिंग बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 to 1, ठीक है। 5 to 1 मीन्स 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that's how it is calculated. So that is the simple code of this program, of this factorial finding program, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोड लिखूंगा पाइथन में, ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा तो आई कैन डायरेक्टली राइट और आई कैन मेक अ फंक्शन, राइट। वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन इन टुमारोज क्लास, ठीक है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को, तो हम फिर कल से छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए फंक्शंस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बिना फंक्शन से कर रहे हैं इसको, ठीक है, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो वी विल टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर और वी कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दिस कोड बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव रिटन दिस, ठीक है। तो वी विल डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ओवर हियर and we will try to execute this, ठीक है। the sample case has been passed, we will submit this code और ये सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, ठीक है।